हेलो लिबे लोइटे वी गेट्स। कॉन्जुगेशन के सीरीज में आज हमने चुने हैं 3 वर्ब्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन फॉर जर्मन लैंग्वेज. सो दीज वर्ब्स आर brauchen, kaufen and trinken. Brauchen means to need. For example, ich brauche ein Buch means I need a book. Kaufen, wir kaufen 2 Kilo Tomaten. Trinken, ich trinke ein Bier, ich trinke ein Limonade, right? So we'll be conjugating these verbs. सो शुरू करते. कंजुगेशन का पैटर्न आप सबको अभी तक पता चल गया होगा. पिछले सीरीज में हमने पिछले वीडियोस में हमने कई सारे वर्ब्स कंजुगेट किए थे. फॉर्मूला सिंपल है एंड दीज वर्ब्स आर आल्सो रेगुलर वर्ब्स. तो इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है. वर्ब में से ईएन उड़ा देना है और उसके बाद से इख के लिए ई ऐड कर देना है. ठीक है. सो इख ब्राउख, डू ब्राउक्स्ट, डू के लिए एस टी, डू ब्राउक्स्ट. एर जी एस, इनके लिए टी. सो ब्राउक्ट. जो सी एच का साउंड है ए यू के बाद आ रहा है आउ के बाद, so इसलिए दैट विल बिकम ख, ख फ्रॉम गले से निकालनी आवाज. ठीक है. ये ब्राउख, वी ब्राउखन, जी ब्राउखन und लास्ट वाला जी ऑल्सो ब्राउखन. सो ये लास्ट के 3 हमेशा सेम रहते हैं. राइट. नाउ काउफन, काउफन मीन्स टू बाय, खरीदना, कोई चीज खरीदना. ठीक है. सो ich kaufe, du kaufst, जी एर एस, ये तीनों हो गए काउफ्ट. ihr also kauft, wir kaufen, sie kaufen and capital G आप वाला और आप लोग वाला also kaufen. And AU sound is always au as in house, mouse, heraus. Trinken, trinken is to drink. Fine. Just like drinken, trinken. So dog को talk कर देना, simple. Ich trinke, du trinkst, sie es trinkt, ihr trinkt, wir trinken, sie trinken and sie trinken. Fine. So this is the conjugation pattern. Now let's also try some example sentences so that we are comfortable making sentences and so that the meaning of the verbs is also clear. Right. So ich brauche ein Buch. Ein Buch. Brauchen is to need. So ich brauche ein Buch. I need a book. मुझे एक किताब चाहिए. Er braucht eine Flasche. What is Flasche? Flasche is bottle, right? And it's die Flasche, so that's why this ein has become einer. Very important. Sie braucht ein Handy. She needs a mobile. Es braucht eine Puppe. Puppe is what? Doll, Khilona. Braucht ihr auch Tomaten? Die Tomate und die Tomaten. Die Tomate singular, die Tomaten n लगा के last में plural. So braucht ihr auch Tomaten? It's a question. That means do you also need tomatoes? क्या आप लोगों को टमाटर भी चाहिए? In that sense. So whenever you come across such a situation, just start firing your German. That's not a problem, right? So wir brauchen keine Bücher. Wir brauchen keine Bücher. Das Buch und die Bücher. Das Buch, die Bücher. Wir brauchen keine Bücher. We don't need any books. Sie brauchen eine neue Wohnung. So ये जो जी है वो थर्ड पर्सन प्लूरल वाला है. That means we लोग, they in that sense, right? So sie brauchen eine neue Wohnung. They need a new flat. अभी ये Wohnung के पहले neue आ गया. Basically the adjective is neue. इसमें e क्यों लगा? Because die Wohnung and die Wohnung है इसलिए ein becomes einer. So that is this concept you will find in adjective declination. उसका वीडियो का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देखिए. ठीक है. Brauchen Sie auch Käse? What is Käse? Der Käse. It sounds like it should be die Käse. जैसे जर्मन में जो पैटर्न चलता है, a ending things, most of the nouns are feminine, मगर this is not like that. Der Käse. Brauchen Sie auch Käse? Do you also need cheese? Käse is cheese. Then kaufen. Ich kaufe einen neuen Computer. Ich kaufe einen neuen Computer. यहाँ पे डेर कंप्यूटर है इसलिए einen neuen हो गया. ठीक है.
ये सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको एडजेक्टिव, डिक्लिनेशन, एम एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव, राइट। देयर इज वन वीडियो फॉर दैट। वस काउप्स डू, ठीक है, डू का कंजुगेशन हो गया काउप्स, वस काउप्स डू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वस, दैट इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। Er kauft 2 Kilo Kartoffeln. What is Kartoffeln? Potato, right? So die Kartoffel, die Kartoffeln, n लगा दिया लास्ट पे, प्लूरल। Er kauft 2 Kilo Kartoffeln. Sie kauft ein T-Shirt. Sie kauft ein T-Shirt. Es kauft nichts. Nichts is nothing. As I told you in the last video, if it is only nicht, nicht means not, and nichts means nothing. Es kauft nichts. Sie kauft einen Rock. Rock is what? Skirt. Sie kauft einen Rock. Kauft ihr auch Bananen? Die Banane und die Bananen, Plural. Die Banane, die Bananen. Kauft ihr auch, Plural. Sorry. Kauft ihr auch Bananen? That means, are you also buying bananas? Here means तुम लोग, उसका conjugation सिर्फ टी लगा के kauft. Simple है. Wir kaufen nichts. Again, wir kaufen auch nichts. Andreas und Petra kaufen Wassermelonen. What is Wassermelonen? So it has two words. Wasser, das Wasser is water, and Melonen. Fine. Similar sounding word. So that's in plural. Andreas und Petra kaufen Wassermelonen. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, सीखते चलते हैं, ठीक है। अब ये आंड्रियास है। आंड्रियास क्या है? लड़के का नाम है। एस को उड़ा दिए तो क्या हो जाएगा? आंड्रिया। आंड्रिया लड़की का नाम हो जाएगा, ठीक है। पेट्रा, पेट्रा क्या है? लड़की का नाम है। और इसका जेंट्स वर्जन क्या होता है? पेटर। पेटर का होता है पेट्रा। आंड्रिया का आंड्रियास, ठीक है। जी काउफन अनानास। अनानास तो सबको पता ही होगा, ओके। बेसिकली इट्स नॉट एन इंडियन फ्रूट, इट केम समवेयर फ्रॉम पोलैंड और हॉलैंड, ओके, जस्ट चेक इट। सो जी काउफन अनानास। देन ट्रिंकन। Ich trinke keinen Tee, मतलब I don't drink tea. So Tee und Doppel A means Tee. Don't call it tea, Tee. Ich trinke keinen Tee. Keinen लग गया तो, einen के पहले के लग गया तो क्या कर रहा है? उसको नेगेट कर रहा है, फाइन, उसको नेगेटिव बना रहा है। Warum trinkst du keinen Bier? Warum trinkst du keinen Bier? Sorry, kein Bier. Beer is das Bier, so it should be kein Bier. Warum is what? Why? क्यों? Warum trinkst du kein Bier? तुम बियर क्यों नहीं पीते हो? Why don't you drink beer? Warum trinkst du kein Bier? Er, sie, es, तीनों के साथ सेम रहेगा, of course. Er trinkt nur Wasser. Sie trinkt nur Wasser. Es trinkt nur Wasser. Now, what is this? This is a new word. Nur. Nur. It's not nur. Nur. ऐसे बोलते हैं. Nur means only, केवल, मात्र, सिर्फ, फक्त, okay? Trinked ihr Milch. Trinked ihr Milch. Milch is what? Die Milch, मतलब milk. Sie trinken Kaffee. Sie trinken Kaffee. Fine. Manchmal trinken wir Limonada. What is Limonada? Lemonade. अभी लेमनेड क्या है बाबा हिंदी में? नींबू पानी, सिंपल, ठीक है। सो manchmal trinken wir Limonada. लिमोनाडा जैसे लिखा वैसे पढ़ना है, बहुत आसान है जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। Manchmal. This is again a new word. So what is manchmal? Manchmal is sometimes, right? कभी कभी, ठीक है। So keep revising, keep practicing, and see you in the next session. Till then, stay healthy and auf Wiedersehen.